Now we move towards the cash flow from financing activities. So cash flow from financing activities. So according to the accounting standard 3 revised, cash flow statement defines financing activity as follows. That is, financing activities of an enterprise are those activities that result in change in the size and composition of owner's capital, ब्रैकेट में including equity and preference share capital in the case of companies and borrowings of the enterprise. So फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज आर दोज एक्टिविटीज हैं जो रिजल्ट करेंगे इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स के कैपिटल में, जिसमें आपका इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल इंक्लूड होगा, एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो थर्ड हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या इंक्लूड करेंगे, दैट इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स या अदर सेम या सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या हमारा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। सो अकॉर्डिंगली हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द अबव आइटम्स आर हम बताते हैं शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये सब जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट है। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज सेपरेटली शोन, हम उनको सेपरेटली बताते हैं बिकॉज इट इज यूजफुल है इन एस्टिमेटिंग क्लेम्स। हम क्लेम कर सकते हैं ऑन कैश फ्लोज पे बाय लेंडर्स ऑफ फंड्स इन फ्यूचर में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने डिटरमाइन करी है बाय एनालाइजिंग करके चेंज इन इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल में, डिबेंचर्स में एंड अदर बोरोइंग्स में। बहुत शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो सकती है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये नोट करनी है कि इंक्रीज इन शेयर कैपिटल टू बोनस इशू इज नॉट शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट में, हम नहीं बताते बिकॉज कंपनी डज नॉट रिसीव कैश इन दैट केस, क्योंकि यहाँ पे जब वो बोनसेस इशू करते हैं तो उन्हें कैश नहीं मिलता है, इसलिए हम उनको बोनसेस को यहाँ पे बताते नहीं है, बट इट इज कैपिटलाइजेशन है ऑफ रिजर्व्स। सिमिलरली conversion of debentures into new debentures or shares is not shown in cash flow statement because आपका कैश का कोई भी आउटफ्लो इनफ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा है।
सो व्हेन शेयर्स और डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो जब आप इनको प्रीमियम पे इशूड करोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज करेगा टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम दिस इशू से आपको कितना मिला, दैट इज नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस प्रीमियम से. So over here we prepared the format of calculation of cash flow statement from financing activities. So particulars and amount. So A है सबसे पहले आपका cash flow from financing activities. So that is proceeds from issue of share. इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड होगा, including premium. Next is proceeds from issue of debentures including premium but excluding discount, loans received. Short term, that is bank overdraft and cash credit, and long term. इसका टोटल कर देंगे. Then B part, cash used in financing activities. अब इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे. सो दैट इज हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस payment for redemption of debentures, payment for buyback of equity shares, including premium, repayment of loans करना short term and long term, interim dividend paid during the year
final dividend paid during the year, interest paid on debenture, interest paid on debentures, interest on loan, और इसका टोटल. And then C, that is cash flow from, if A is more than B, or cash flow used in, if B is more than A, in financing activities. फिर ये फाइनल यहाँ पे आएगा. Moving towards the question number 32. तो 32 में लिखा था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन गिवन टू यू 2 लाख एंड 2,50,000. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने रिपेड किया था लोन ऑफ 1 लाख रुपीज का. तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं. लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट over here particular amount rupees, particular amount rupees. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है. सो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन इज गिवन 2 लाख and to balance carried on is 2,50,000. क्वेश्चन बोलता है कि आपने कंपनी ने रीपेड किया था 1 लाख रुपए का लोन दिया था. सो टू बैंक अकाउंट 1 lakh. So total comes to 3,50,000. So जो difference आया 1,50,000 का, so that is your by bank account, that is loan taken. Now statement showing flow from financial activities. तो स्टेटमेंट शोइंग करना है फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज. So loan taken during the year is 1,50,000 less repayment of loan आपने किया था 1 लाख रुपीस का. सो 50,000 बच गए. सो जो 50,000 रुपीस बच गया है उसे आप बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज.
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32. Moving towards the next question number 33. So question number 33 बोलता है from the following information calculate करो cash flow from financing activities and you have been given equity share capital security premium reserve 12% debentures. Additional information में आपको दिया है interest paid on debentures. Okay, तो चलिए फाइंड करते हैं cash flow from financing activities. Particulars amount rupees. So यहाँ पे हम लिख देंगे issue of equity share capital. तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में था कि पहले 9 लाख ओपनिंग था, 10 लाख क्लोजिंग था, तो मतलब आपने 1 लाख रुपीज का इशू किया इक्विटी शेयर कैपिटल. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसिव. तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो पहले था 2,50,000, बाद में हुआ क्लोजिंग के टाइम पे 2,60,000. सो दैट मीन्स 10,000 हुआ, तो टोटल कम्स टू 1,10,000. अब इसमें से आपने पेमेंट किया, सो आपने रिडम्पशन चालू किया. सो रिडम्पशन ऑफ 12% debentures is 50,000. Interest paid तो 12%, तो 1,50,000 का 12% आप पे करेंगे. So that comes to 18,000. तो 68,000 उसमें से माइनस होगा, तो you will get 42,000 and that will be your net cash flow from financing activity. So यहाँ पे ये सब एंड होता है. Moving towards the question number 34. So in question number 34 में लिखा था from the following extracts of balance sheet of XC Limited, calculate the cash flow from financing activity. And you have been given the equity share capital 5,25,000, 4 lakh, 10% preference share capital 4 lakh, 5,50,000. Securities premium reserve 2,25,000, 1 lakh, 12% debentures 4 lakh and 3 lakh is given to you. Additional information: equity shares were issued on 31st March 2020. Interim dividend on equity share was paid 15%. Preference share was redeemed on 31st March 2020 at a premium of 5%. Premium paid was debited to a statement of profit and loss. Fourth, had 12% debentures of face value 1 lakh were issued on 31st March 2020. तो आपको फाइंड करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो ओवर हियर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमें फाइंड करना है. particulars amount rupees
issue of equity शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे है 4 लाख ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में था 5,25,000, so that comes to 1,25,000। proceed of security प्रीमियम रिजर्व। तो आपका अगर देखोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अगर हम बात करें तो इट इज 2,25,000 minus 1 lakh, so 1,25,000 issue of 12% debenture which is given to you 1 lakh rupees in adjustment number 4। तो outer column जाएगा 3,50,000, तो this is the another column of amount rupees। अब आप लेस करोगे इसमें से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्योंकि आपने रिडम्पशन किया था प्रेफरेंस शेयर का, तो 5,50,000 minus 4 lakh, so that comes to 1,50,000। ये आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सो दैट इज प्रीमियम कितना हुआ रिडम्पशन का, तो 1,50,000 का 5% करेंगे, क्योंकि आपको पॉइंट नंबर 3 में बोला था प्रेफरेंसेस वेर रिडीम्ड ऑन 31st March एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, दैट इज 1,50,000 का 5% रिडम्पशन करोगे तो 7,500 आएगा। इंटरम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड आपको क्या बोला गया था 15%। अगर आप पॉइंट नंबर 2 में पढ़ोगे तो लिखा था इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड 15%, तो 4 लाख का 15% इज 60,000, ये आपको पेड करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, so that comes to 3 lakh multiply 12%, so that comes to 36,000। premium on preferences, so premium on preferences is 5,50,000 multiplied by 10% is 55,000। So 1,50,000 plus 7,500 plus 60,000 plus 36,000 plus 55,000. The total comes to 3,08,500. So that comes to 41,500. So ये है आपका net cash flow from financing activities, right? तो यहाँ पे आपका ये वाला सम एंड होता है। Now we draw the lines because it is important.
क्वेश्चन नंबर 35. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ओके, पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2019 का आपको बैलेंस दे दिया गया है और बोला है मशीनरी एट कॉस्ट 50,000 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 10,000, कैपिटल है 35,000 30,000, बैंक लोन है 31 मार्च 2019 में 10,000. ड्यूरिंग द ईयर मशीन की कॉस्टिंग थी 10,000, was sold at a loss of 2,000. Depreciation on machinery charged during the year amounted to rupees 6,000. Okay, so first of all we prepared the plant and machinery account. So plant and machinery account में particulars, amount rupees, particular amount rupees. Debit and credit to balance brought down. तो plant and machinery का balance था 40,000 and closing was 50,000. फिर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन का कॉस्टिंग था 10,000 was sold at a loss of 2,000. तो that means by bank account आपने सेल किया एक कितना, यस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ड्यूरिंग द चार्ज अकाउंटिंग वाज 6,000 है ना. राइट, और आपको लॉस हुआ. सो लॉस कितने का हुआ था आपको, 2,000 रुपीज का लॉस हुआ था. सो दैट मीन्स आपने सोल्ड किया था 8,000 के अंदर में. सो नाउ ओवर हियर बिफोर आई गो टुवर्ड द सेल अमाउंट मुझे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट particular amount rupees, particular amount rupees. So over here I will write down to, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी और यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन is 10,000 and over here it is given 12,000. Now आपको क्वेश्चन में बोला गया था डेप्रिसिएशन वाज 6,000. सो आपका जो डेप्रिसिएशन था वो था 6,000 रुपये. सो दैट टोटल कम्स टू 16,000. तो अब जो डिफरेंस है दैट इज 4,000. तो ये आपका कहाँ जाएगा, मशीनरी में. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, 4,000 रुपये. सो दैट कम्स टू बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000. तो कहने का मतलब था कि 10,000 का जो मशीन था वो आपने 2,000 रुपये में लॉस में बेचा, मतलब 8,000 रुपये, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा आपका 4,000 रुपये का. तो मतलब इन शॉर्ट आपका मशीन तो आपको 4,000 रुपये ही देगा. तो बैंक अकाउंट में सेल आ गया 4,000 रुपये. इसका टोटल किया आपने 50 में 10 ऐड किया 60, 60 minus 40, so that comes to 20. So ये जो 20,000 है that is your two bank, so that is your two bank account purchase. और ये है आपकी क्वेश्चन मार्क फिगर, जैसे कि यहाँ थी ये क्वेश्चन मार्क फिगर.
Now you will be preparing the cash flow from investment and financing एक्टिविटी आप प्रिपेयर करेंगे. चलिए हम प्रिपेयर करते हैं. कैश फ्लो from investing and financing एक्टिविटीज को प्रिपेयर करेंगे. So I'm giving you particular and amount rupees. सबसे पहले है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो आपने क्या किया, सेल ऑफ मशीनरी आपका था 4000 लेस परचेज ऑफ मशीनरी 20000. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 16000 तो आपको लॉस ही हुआ. तो इसीलिए आप क्या बोलोगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सेकंड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने सबसे पहले बोला इशू ऑफ कैपिटल. सो आपका कैपिटल था 5000 रुपये. उसके ऊपर आपने लेस कर दिया क्योंकि आपको रीपेमेंट हुआ. सो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000. सो बैलेंसिंग में भी नेगेटिव आया 5000 रुपये. सो दैट इज योर नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. So over here the sum gets over.